नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. आज आमी ही इंटरव्यू शूट हाजेच खातीर करता की आज वर्ल्ड कॅन्सर डे आसा आनी कॅन्सरा कडेन झगडून परत आयले आनी जाणी सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन दिलें अशें आसा आमचे SP नॉर्थ निधीन वाल्सन. तांचे कडेन उलयतले आनी शूट हाजेच खातीर गाडयेन करता बिकॉज ही इज इन अ हरी टू गो फॉर अनदर फंक्शन इन पुना. They are participating in a marathon. Yes, we have having all the cancer survivors are assembling in Pune, and we are doing a 10-kilometer run for an awareness on cancer as part of World Cancer Day. So I'm going to participate there. Sir, when you participated in Ironman and no one actually, and you completed it also, no one actually would believe that someone who had a cancer 1 year back could do that. Even I was not sure whether I will be able to do it. I had a lot of my doubts also. जब I would say November was the event. October में मुझे थोड़ा confidence आया कि मैं कर सकूँगा. But ये more than the output, I always enjoyed the process. तो मुझे ट्रेनिंग करना अच्छा लगता था, मैं डेली वर्कआउट करना मुझे अच्छा लगता था. So and I think this output is only outcome is just because what you do. So I think because of the training and the right guidance from my coaches, I was able to do it. We also seen you often cycling and actually going around I think Benjamin Street early in the morning at 10 o'clock. See, Ironman training में मैंने ये देखा कि Ironman is not a particular event. Ironman is a way of life. So it teaches us like how important it is to be remaining fit and how enjoyable, how exciting it is to get trained every day. So I feel really like restless if I don't do a workout. जो जितना possible है, if possible in the morning, if possible in the evening, I try to do a workout. So whenever I get a time in the day, and my work, it is very difficult because it's a police job 24/7. कभी most of the days you sleep very late, and sometimes you have to go in the nights, and also sleep also is very very important for recovery. So जितना मुझे rest मिल सकते है उतना rest लेके जितना time में जब possible करता, I try to do that. So many a times when someone is diagnosed with cancer, he just gives up. And I think you are one example where you're not given up. You fought back and actually back and with a more vigor. Yeah, see, that is what I wanted to tell everyone also. Cancer is one of the examples. In everybody's life there will be a lot of difficulties. Financial difficulties हो सकता है, किसी का disease हो सकता है, किसी का कुछ ना कुछ problem तो होता है. जैसे सन्नी डियोल ने इसमें बोला है बॉर्डर में, लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है. कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो रहता है सबका, हर बंदे को कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहता है. ऐसा कुछ नहीं है कि देयर इज़ नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु इज़ लाइक कम्प्लीटली हैप्पी और सेटिस्फाइड. एवरीबडी विल हैव सम डिफिकल्टी, सम प्रॉब्लम एंड सम डिफिकल्टी इन द लाइफ विच विल चेंज देम. And every cancer fighter should take cancer as one of the difficulties which they are facing in his life, in his or her life. So once you are enduring एक 3-4-5 महीना या 1 साल आपने ये अगर फाइट कर लिया तो आप उसके बाद आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो. तो इसको एक पॉजिटिव आउटलुक से लेके we should never give up and always keep the fight going. So being an IPS officer, you are actually at a helm of affairs. You are just busy all the time in any of your posts. Suddenly one day you realize that okay, now I'm diagnosed with cancer and my life will change now. What was that feeling that time? वो एक्चुअली सबसे वो being an IPS officer that actually matters also, like कि मतलब हम लोग थोड़ा सा सर्विस ओरिएंटेशन में सर्विस में आता है. So we always think for an opportunity to help the people. So and being to help the people, to give service to the people, you should always get into like some postings which are very relevant also, which can give service to the people. There is public interaction, so almost all the officers like to be in field. So when I was diagnosed with cancer, the thing which I was very much afraid of or like tensed was like whether I will be the same person which I was earlier. तो मैं पहले बहुत जोवियल था, मैं बहुत एक्टिव था. तो एक बार ये होने के बाद whether I will be able to continue with the same spirit and zeal that actually all made me very tensed. जो पहले था वो उसी लेवल में मैं आ सकता था. But in fact I would say मैं उससे बेटर अभी कर पा रहा हूँ. ठीक है, पहले मैं ज़िंदगी में if I was not diagnosed with cancer, I wouldn't have ever thought in my life कि I will try for Ironman.
21 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में कभी भागा नहीं, वो भी हमारे ट्रेनिंग में, एकेडमी ने हमें भगाया, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. सो बिकॉज ऑफ दिस समथिंग विच इज़ वेरी वेरी मतलब डिफ़िकल्ट इन लाइफ, आई थिंक उससे निकलने के बाद जो मुझे लगा कि वाट एवर आई लॉस्ट फॉर 1 year, आई वॉन्टेड टू कॉम्पनसेट फॉर दैट. So उसके लिए I started that training, I started enjoying the process and I am able to do it. I would say to everyone, like the difficulties in life, it is just, you should not take it as difficulty. The difficulty should be rephrased, or the problem should be rephrased as challenges. Yeah. In life there are only challenges. If the challenges are for you to learn, for you to improve, for you to better your life. So take every difficulty as a challenge, fight it out, find a solution, overcome the challenge, then you will be able to do very very good things and great things. Sir, family support is also important. Yes, yes, You are right. young, your wife must be really tense that time कि now what next? You are Yeah, diagnosed वो with जब cancer. पहली बार जब वो when they doubted the cancer, मतलब see cancer, when you diagnose cancer there are a lot of procedures, like it is not immediately one day आपने टेस्ट कर लिया और next it is cancer. First ये होता है कि you doubt there is a cancer. To clarify that you have to do a biopsy. फिर biopsy करने के बाद you have to do a PET scan to see what stage your cancer is. तो biopsy का रिजल्ट आने में टाइम लगता है. So when you are undergoing biopsy itself, there is always a possibility either you are having cancer or not cancer. So वो एक uncertain period होता है ना. So that was very tensed. I still remember when I was first told कि मतलब I was having cancer and I conveyed this message to my wife. She cried for a long time. Then I told to my parents also, but my parents were strong enough to endure it. Then some of my friends were also like very sad. Like I still remember one of my friends in Bangalore, he told me and called me and saying that he cried also hearing that message. So it is very difficult at the initial stage. And next question which he keep asking is like, why me? मुझे क्यों हुआ? मैंने क्या किया? Why me only? हाँ, why me only? That question always will be active. Human beings के एक अंदर एक आदत रहती है कि हमें हर सवाल की जवाब चाहिए. बट मैंने उस चीज़ से एक पता चला कि बहुत सारा सवाल इस दुनिया में है, इस यूनिवर्स में है, जिसमें कोई जवाब नहीं है. इनफैक्ट आई एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट. साइकोलॉजी में ये पढ़ाते हैं, देयर इज ए चैप्टर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, उसमें बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी डोंट हैव सोल्यूशन बट वी डोंट एनकाउंटर इन आवर लाइफ. तो हमारे माइंड में होता है कि हर क्वेश्चन का हमें जवाब चाहिए. ऐसा नहीं है जैसे भगवान एक्सिस्ट करते हैं कि नहीं, एवरीबडी सेज ये कुछ है तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट वी बिलीव इट. So in this way also we believe it is part of a destiny. But were you like complaining, भगवान मेरे मुझे ही क्यों? पहले इनिशियली तो मैं भी बोलता था भगवान मेरे साथ ऐसा क्या हुआ. बट फिर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब मैंने ट्रीटमेंट लिया था, आई ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है कि मतलब देयर इज़ प्राइवेट रूम्स ऑल्सो, बट जनरली कीमो करने के लिए देयर इज़ अ कीमो लैब, कीमो रूम में बहुत सारे लोग आता है, पेशेंट्स जो आता है, दे कम एंड डू द कीमो एंड डू. वो जब मेरा कीमो होता था, मेरा कीमो सबसे लंबा था, सवेरे से शाम तक मेरा कीमो चलता था. तो मेरे बगल में जो भी लोग आते थे, दे यूज्ड टू कीप चेंजिंग. तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड माय कीमो, द फर्स्ट पर्सन हु वाज बाय माय साइड वाज अ 1.5 year old बॉय. ओके, ठीक है. एंड जब हम लोग बड़े लोगों को कीमो के लिए इधर डालता है, इंट्रावीनल, ठीक है, और बच्चों के लिए वो डाल नहीं सकता, उसके इधर, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, इधर से कीमो वाज. एंड he was crying and his mom was not crying. तो मैंने पूछा यार like how do you feel? बोला ये इसको बचाने के लिए है, तो I am happy like he will be surviving, otherwise इसको कुछ पता नहीं क्या. So that actually changed my outlook. फिर मुझे पता चला कि यार there are lot of people out in the world who are facing more difficult situations than us. And at least I got diagnosed at the right time. I got treatment. I have parents with me. I have a family with me. There are a lot of patients, a lot of people who won't even knowing that they are having cancer and still living a life and living in pain. So in that way, then that day onwards, I was thankful to God कि मतलब भगवान ने मुझे इतना सारा blessings दिए. So how difficult is the fight? Because many of the people who will be watching, some of them must be already facing this problem. सी कैंसर की फाइट की सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी इज़ द टाइम पीरियड. जैसे हर डिसीज़ अगर देख लेंगे तो हर डिसीज़ के एक टाइम पीरियड होता है कि आप उसको
आपको कैंसर डायग्नोस हो गया, डायग्नोस होने के बाद ट्रीटमेंट कर ले, जैसे कोविड भी हो, कोविड का भी कितना लंबा फाइट है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, बट कैंसर फाइट इज लॉन्ग, अंडरगो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, it sometimes goes up to 6 months, sometimes goes to 8 months, sometimes goes to 1 year, sometimes it takes 1.5 years, sometimes it is 2 years, sometimes ये fight चलता रहता है. So this period, time period makes it very very difficult. 6 महीने में हमारा पर्सनालिटी चेंज हो जाता है. So you are a very outgoing person. You expect you are a very outgoing person, you are a very social person, and because of the chemotherapy, because of the treatment, you are stuck inside the room. So you are not able to talk to the people, you are not able to interact with the people. And when I underwent treatment, I had this COVID also spreading all around. तो मतलब 5-6-7 महीने आप एक रूम में फंस जाता है तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. when you are stuck inside the room, माइंड भी हमें try to take What were the thoughts when actually you were alone in the room? Initially first thing was like why me. वो बहुत सवाल मैंने पूछा यार क्या हुआ, मैंने बहुत मतलब I started thinking like मुझे कैसे हुआ, मैं I started analyzing what I started postmortem of my past. मैंने क्या ऐसा किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ. फिर बाद में मुझे पता चला कि उसका कोई जवाब नहीं है. The most important thing in the life is to stop thinking about the past and not worrying about the future and living in the present. अभी जो मोमेंट है ठीक है यार, कैंसर हुआ ठीक है, now I am having a treatment, at least I have a good doctor treating me, I am with my parents, I have my kids with me. इतना टाइम तो पुलिस में कभी मौका नहीं मिलता बच्चों के साथ, तो I took it as a positive manner. Then I started studying new things. मैंने MSc साइकोलॉजी कंप्लीट किया, ठीक है, फिर मैंने एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश की. फिर then I during that time you were busy learning. busy learning. Then I taught my kids मलयालम, उसको पढ़ाना करते थे, पढ़ाई करते थे. फिर थोड़ा सा बुक्स पढ़ना शुरू किया. So I think initially it was 1.5 to 2 months was very difficult. Then I think I took it like a sabbatical and started improving on my capabilities, I would say. There's one emotional photograph which is there in your social media where kids are kissing your head, and yeah, I think it's a bald head. Kissing. नहीं, when you do undergo chemotherapy, most of the people lose the hair and all. तो मेरे में क्या हुआ था कि I started losing hair in patches. इधर बाल्ड हो गया, इधर बड़ी जो लुक गंदा लुक लगने शुरू हो गए, तो आई ट्रिम्ड द एंटायर हेड. तो हमेशा मेरा बाल्ड ही रहता. तो सो माई किड्स लव मी ऑब्वियसली, आई लव माई किड्स, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर विथ मी ओनली, ठीक है. सो दे यूज्ड टू प्रे एवरी डे. कि छोटे बच्चे उनको क्या पता रहता है, फिर भी उनको पता था कि पापा को कुछ प्रॉब्लम है, डैडी हैज़ गॉट सम इश्यूज. सो दे यूज्ड टू प्रे एवरी डे कि मेरा फादर का, हम लोग हमारा फादर का डिसीज़ को जल्दी ठीक करा दो. एंड दे ऑलवेज स्पेंड टाइम विद मी. तो उनके साथ रहने से आई वॉज हैप्पी. एंड व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू आर जोवियल, so I think the body also gets recovery is faster. So okay, another thing, when you came to Goa, I think that time you were not posted in Goa. When did actually diagnosis happen? I was posted in November. मैं इधर आ गया था, मेरा दिसंबर में पोस्टिंग हुई. Diagnosis was in February. That time you were posted, you were in Delhi or you were in Goa? When I was diagnosed, I was in Kerala. You were in Kerala. Yeah. Okay, now since you are in Goa and there are so many similar cases in Goa, are you meeting some of the cancer? Yes. I keep meeting. I am associated with a lot of cancer मतलब NGOs which are associated with cancer treatment. I keep meeting people. मेरा बहुत सारा friends मुझे referral देता है, and बहुत lot of people also tell me like this मतलब these patients also keep calling me. मैं सबको प्रॉपरली एडवाइस करता हूँ, जितना पॉसिबल है मैं करता हूँ. माई एडवाइस टू ऑल द पीपल हु आर फाइटिंग कैंसर इज़ लाइक प्लीज़ हियर टू योर डॉक्टर्स. आज जैसे डायग्नोस होता है, लॉट ऑफ पीपल विल कम एंड टेल यू कि मतलब इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये दवाई मिलेगा, विच आर नॉट certified doctors. So everybody should go to a certified proper. Lot of people depend on quacks. Yeah. So that should be avoided. कि मतलब ये छोटा सा ये गोली है या फिर एक कितना पानी है वो ग्लास में दे देंगे, उसके पीने से ठीक हो जाएंगे, कभी होता नहीं. Because मैंने एक बार देखा था, when I went for a PET scan, a person was there with lymphoma, पूरा बॉडी उसका इतना swollen हुआ था. तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा इसका क्या हुआ, तो 1-1.5 साल पहले वो आए थे और उसको बोला था तुझे कैंसर है, यू हैव टू अंडरगो ट्रीटमेंट. वो भाग गया वहाँ से, ट्रीटमेंट नहीं किया. ही वेंट अराउंड गोइंग विद क्वैक्स, वो छोटा मोटा दवाई ववाई करने से, मतलब जो होता है ना ट्रेडिशनल टाइप, जो होता है ट्रेडिशनल नहीं बोल सकता, जो मतलब नॉन साइंटिफिक वेज ऑफ ट्रीटमेंट.
वहाँ पे गया, ठीक नहीं हुआ, वो बहुत ही तबीयत खराब हो गया, देन ही अगेन केम बैक एंड देन ही अंडरवेंट ट्रीटमेंट. So the biggest advice is to go for a proper Proper treatment. certified doctors. Try to find the best doctor. And don't give up. No, never give up the fight. Never ever give up the fight, because एक बार आपने माइंड में डिसाइड कर लिया मेरे से होता नहीं, तो बॉडी विल ऑटोमेटिकली सरेंडर टू कैंसर. माइंड में फाइट है, अगर माइंड से जीत लिया बॉडी विल ऑटोमेटिकली. देयर इज अ फेमस सेइंग ना, फर्स्ट योर हार्ट शुड टेक द जंप, देन योर बॉडी विल फॉलो. First you decide in the mind that I am going to win, then your body will win. Okay, thank you very much sir for spending time Thank with us. हे आशिल्ले नितीन वल्सन, SP नॉर्थ, जाणी एक मोठी फायट दिल्ली आसा आनी सगळ्यां खातीर एक इन्स्पिरेशन आसा की जर कॅन्सर डायग्नोस जालो जाल्यार इट्स नॉट दी एंड, बट इट्स अ कॉमा, नॉट अ फूल स्टॉप. सो and how to deal with it, kindly store this interview. Whenever you want a motivation, please watch this interview. तुम पळयतात हब एनकाउंटर on your favorite website www.goanewshub.com. RDXGOA is our channel partners and goabalance.com is our production partners. Keep watching.